हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल लर्न प्रोग्रामिंग। आज हम सीखेंगे एक नई चीज आफ्टर इफ एल्स नेस्टेड इफ एंड मल्टीपल इफ एल्स। मेरे पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि इफ एल्स कैसे यूज होता है, नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, एल्स के अंदर इफ कैसे लगाते हैं, इफ के अंदर एल्स कैसे लगाते हैं। नाउ इज टाइम टू लर्न स्विच केस। स्विच केस ऑल्सो अ सिलेक्शन स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। अगर कोई स्टेटमेंट है, आपको डिसीजन लेना है, ये रन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब रन करना चाहिए, कितनी बार रन करना चाहिए, किस कंडीशन पे ये रन करेगा, किस कंडीशन पे नहीं रन करेगा, दैट हम डिसाइड करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट से, जो कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में हमने पहला पढ़ा था इफ एल्स। काफी डिटेल में मैंने पुराने वीडियो में इस पे एक्सप्लेन कर रखा है। आज हम पढ़ेंगे स्विच केस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्विच केस क्या होता है? एक्चुअली स्विच केस, स्विच मीन्स स्विच मतलब जंप करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कहते हैं ना, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। स्विच मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। केस मीन्स किस केस में, केस केस मतलब पॉसिबिलिटीज, यही इसका मतलब है और कुछ नहीं है। तो इफ एल्स का एक, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का एक कह सकते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स को हमने प्रोग्रामिंग में स्विच केस में हम चेंज कर सकते हैं जब केसेस फिक्स्ड होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हो आप जिसमें आपको पता है कि 5 केस है, 5 पॉसिबिलिटी हो सकती, नंबर ऑफ केस मतलब पॉसिबिलिटी, आपके प्रोग्राम में आपको पता है कि 4 पॉसिबिलिटीज हैं या 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस केस में आप स्विच केस लगा सकते हो। स्विच केस बहुत ही सिंपल होता है और ये प्रोग्राम को सिस्टमेटिक और सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम स्विच केस लगाते हैं। जो काम आप इफ एल्स से कर पाते हो उन्हीं सारे टास्क को हम स्विच केस से कर सकते हैं। तो स्विच केस अगर ना भी हो तो प्रोग्रामिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इफ एल्स है, बट स्विच केस उसको और सिंप्लीफाई कर देता है। जहां हम नेस्टेड इफ लगाते हैं वहां हम स्विच केस लगा सकते हैं। तो स्विच केस क्या होता है? इट इज अ सिलेक्शन और डिसीजन स्टेटमेंट, एज वी नो दैट, क्योंकि हम उसी में आगे बढ़े हैं। वी कैन डू द सेम थिंग विद इफ एल्स। जो हम इफ एल्स से करते हैं वो हम स्विच केस से भी कर सकते हैं, बट इज इजी टू यूज विद इन मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन मतलब जब आपके पास कई सारे, मैंने आपको बताया स्विच के साथ वही लगाओगे जहां आपके पास 2 कंडीशन है, वहां स्विच केस मत लगाइए। जहां आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, फिक्स्ड है, यानी कि कई सारे हैं और आगे भी क्या होंगे आपको पता नहीं है, फिक्स्ड अगर आपके पास कंडीशन है तो आप स्विच केस लगा सकते हो। स्विच केस का सिंटेक्स, सिंटेक्स मैंने बता रखा है, फिर बताती हूँ। सिंटेक्स का मतलब होता है आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ द यूजिंग स्विच केस? स्विच केस में हम पहले स्विच वर्ड यूज करते हैं, ये कीवर्ड है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में, जैसे आप कोई भी कंपाइलर है, कोई भी आईडी यूज करते हैं तो स्विच जैसे लिखोगे ये वाइट हो जाएगा, दैट इज स्विच केस इज अ कीवर्ड। 32 कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में, स्विच केस वन ऑफ them। स्विच केस एक्सप्रेशन, आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है कि आपके जो केसेस हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे। स्विच आपको कोई लिखना है वेरिएबल का नाम या एक्सप्रेशन जिस पे केसेस डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर आपको केस डिफाइन करना है और ब्रेक लगाना है। केस डिफाइन करना है, ब्रेक लगाना है, ये आपको करते जाना है आपके पास जितने फिक्स कंडीशंस हैं। डिफॉल्ट भी ऑप्शनल होता है, डिफॉल्ट लगाओ चाहे ना लगाओ, बट डिफॉल्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपने 5 कंडीशन दे दी। अगर 5 कंडीशंस में अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट रन किया, दूसरा तीसरा ऐसे। अगर कोई भी रन नहीं किया ऊपर वाले पांचों के पांचों कंडीशंस फॉल्स हो गए तो फिर क्या होगा? दैट इज डिफाइंड इन डिफॉल्ट केस। अभी हम एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि स्विच केस कैसे लगाते हैं, केसेस कैसे बनाते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल। डिफॉल्ट का ये मतलब होता है ऊपर के जितने केसेस हैं वो सारे के सारे अगर मीट नहीं कर रहे हैं कंडीशंस को तो लास्ट में एक डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे और एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा विद द एग्जांपल। स्विच केस को अभी फ्लो डायग्राम से और सब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें स्विच केस के फ्लो डायग्राम में क्या है कि कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर केस नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं कि एडिशन में हम मेनली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम मेनली जाते हैं 4 तरीके के होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। ठीक है, तो हमने यूजर को यहाँ पे एक्सप्रेशन में बोला हमें प्लस करना है। अगर प्लस होता है तो ये केस करो, माइनस है तो ये स्टेटमेंट रन करो, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला करो, और अगर इसके अलावा कुछ दे दिया, यहाँ पे केस 4 भी, मैथ में 4 होते हैं, हम 4 भी लगा सकते थे, अभी इसमें 3 ही मैंने बनाया है।
तो अगर इसके अलावा कोई डाल दिया आपने, इक्वल टू डाल दिया या एंड सिंबल डाल दिया, तो उस केस में मैथ में तो 4 ही होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो उसमें क्या करना है, उसमें आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट डाल सकते हो कि इनवैलिड ऑपरेटर लाइक दैट, तो डिफॉल्ट इसलिए देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं आप डिफॉल्ट लगाओ। स्विच केस का ये मतलब नहीं है कि डिफॉल्ट उसमें होना ही चाहिए, नहीं, मत लगाओ, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी स्विच केस कैसे हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने सीखा स्विच केस होता क्या है, स्विच केस हम लगाते क्यों है, स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, फ्लो डायग्राम क्या होता है। नाउ विद एग्जांपल वी विल लर्न हाउ टू यूज इट इन द प्रोग्राम। तो लेट्स स्टार्ट। मेन लगा दिया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया ग्रेड, ठीक है, उसकी हमने वैल्यू डाल दी, आप इसका इंटर भी करा सकते हो। अब हमारा जो केस है वो ग्रेड ग्रेड फिक्स होता है, वी नो दैट कि हमारे मार्कशीट में ग्रेड ए बी सी डी ई एफ, जेड तक ग्रेड नहीं होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होते, जी तक चले जाओगे बस जेड तक नहीं होते। तो लिमिटेड केसेस हैं हमारे ग्रेड्स के जब हम मार्क्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको लेके एक, क्योंकि ग्रेड फिक्स होते हैं इसलिए हम स्विच केस उस पर अप्लाई करके देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो स्विच केस, ग्रेड की वैल्यू अगर ए हो, हालांकि हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल दी है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन वी रन दिस प्रोग्राम, तो व्हाट विल हैपन। अगर केस की वैल्यू ए है तो प्रिंट करो एक्सीलेंट और ब्रेक। क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने उधर बताया कि स्विच केस में ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक केस में भी वो गया, वहां से ब्रेक खत्म, क्योंकि ग्रेड जो होता है रिजल्ट में, या एक मल्टीपल केस नहीं ट्रू होंगे इसमें, एक बार में एक ही केस, एक वेरिएबल की वैल्यू के एक्सप्रेशन के लिए एक ही केस जो होगा वो ट्रू होगा, इसलिए ब्रेक लगाना यहाँ जरूरी है। ठीक है, इसलिए ब्रेक लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन। तो अगर केस ए है तो प्रिंट करो एक्सीलेंट और यहाँ से निकल जाओ, कोई काम नहीं है। अगर एक ही ग्रेड की वैल्यू ए हो सकती है, तो अगर एक है तो वापस आना है। अगर केस की वैल्यू बी और सी है, हम दो केस एक साथ, यहाँ पे स्विच केस में दो केस एक साथ भी लगा सकते हैं कि बी हो या सी हो, और वाला चीज जो हम इफ में लगाते थे और लगा के। तो अगर केस की वैल्यू बी हो, यानी आपके ग्रेड की वैल्यू अगर बी हो या सी हो, दोनों ही केस में वेल डन प्रिंट करके बाहर आ जाना है, यानी बी और सी दोनों केस में आपको वेल डन प्रिंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर डी है तो यू पास्ड, अगर एफ है तो बेटर ट्राई अगेन। और अगर इनमें से नहीं, यानी अगर ग्रेड की वैल्यू ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है, तो इनवैलिड ग्रेड प्रिंट करेगा। तो मैंने बी डिफॉल्ट वैल्यू डाली है, तो एक्सप्रेशन विल बी दिस, वेल डन, क्लियर, वेल डन। और ये जो लाइन है वो तो रन करेगी ही करेगी, तो दैट इज व्हाट इज योर ग्रेड, योर ग्रेड इज बी, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज वेल डन, वेल डन and grade is B. Your grade is B. Okay. I hope समझ आया हो ये. Let's run this example. I'll try to understand this example. What is this example? In this example, there is a value, there is a variable that is ch. We are going to enter the value of ch. If we enter the value of ch1, what will happen? The output will be 1 and 2. Just because the output will be 1 and 2, just because there is no break statement. Okay, because what happened when switch can decide which case is to be run, it will go to the case 1 because we have entered 1, that is print 1, but there is no break statement, is immediately fall down into default statement and the answer will be 1 and 2. If we enter 2, only 2, then case 1 is not true, then it automatically went to default statement and its output will be, that is the output of this program. When we enter 1, output will be 1 and 2 because you are not using break keyword to break the case after execution of case 1. That's why it will go to the default statement, and after and beside 1, whenever you enter any value, that 2, 3, 4, 5, 6, any value, the
default statement will run because there is only one case which is defined, and that is default is default. Default means if above cases are not going to be meet the condition, default will run. Okay, this is the example without break statement. Now, this is the expanded example of the previous example. Okay, and there is this program is also without break. It's very important to understand the use of break word and break keyword, and use of break. Break is also as a jump statement. I will tell you in the next video, that is all about loop. We are using break loop also, is very important. It's very nice also. It is good to use in program, and sometimes we have to use break statement. Okay, here is also in switch case break is also plays very important role. Let's see. Suppose you in here I have taken a variable with the name of num, and the initial value of the num is 2. And here there is some twist. The value of num is increased by 2. That is not value of num. I am adding 2 value in num. That must become 4. Switch 4. So first instance, case number 1, case number 2, and case number 3 is not going to be happen because the value of the case is 4, and 4 is not described here. So it will go to the default statement, and the answer will be the default value is 2, because this is going to be print the value of num, and the value of num is 2 only. Here I am not updating the value of num, I am just changing the value of case. Like if there will be only num, that means switch at case 2. But here I am added 2 value. If this is the case, I want to make you sure that I am not going to change the value of num. Here I am only changing the value of case. I am changing the value of case. Num is 2, and I am adding temporarily 2 into the num. Then the answer, the output of this program will be. I think you will be able to understand what I am going to tell you. There is no break statement, and there is no number 4 cases defined. Okay, up to number 3 cases are defined, not 4 cases defined. And if we can do anything here, we can change the expressions, switch, and the value. You have to pass a value. Okay, value in the form of variable or any expression you can put in the switch bracket. That is the important thing. Let's see another example. Suppose we are going to I am going to change this, not in place of num plus 2, just put num. Okay, so what will happen? The value of num is 2. Case 1 is not true. Case 2 is true because the value of num is true. It will print 2, and there is no break statement. It will go to the case 3 also because there is no break statement. Without break statement, after meeting one condition, all the cases going to be happen. It fall down immediately to the to the next statement and run this statement. Yeah, so that will it also run, and again the value of again 2 will print it, and default is going to be happen because there is no break statement. So it is also 2, 3 times 2 to 2 going to be printed, just because of you are not using break. Break is very important.
which is to be used in case, because after meeting one case, why we are using switch case? Because we are having limited options, and we can pick only one option at a time. That is a rule of optional thing. Okay, suppose we are having three options, we have to choose one option at a time. So that break is important. If we are not using break, what will happen after meeting one condition, after meeting one case, will not come back from the switch case. It will fall down to the next statement, and default always going to be happen if we are not going to use break statement in the case. Clear? I think I'm able to make you understand what is the use of break. Next, in this program, whatever I explained earlier by using my marker, in this statement, in this program, I'm going to be repeat this again to make you understand and for more clarity. Let's see. Here is the variable that is I, and the initial value of the I is 2. Now see, switch I. Cases are dependent on the value of I, and what is the value of I is right now is 2. Case 1 is not going to be happen just because the value of I is 2. So switch is going to be in case 2. Then the output will be case 2, which is here. Okay. Now there is no break statement. Okay. So that it will not go back to the return or after switch case, because at a time only one case is going to be made. It's not going to be come out from the switch. It will go to the next case automatically just because there is no break. Then case 3 also going to be printed, and again there is no break. Case 4 also going to be printed. Again there is no break, then default will also going to be printed. This is the a very good example to make you understand that what is the importance of using break in switch case. If you're not going to use break, then it will happen like this. Next. Here. It is a perfect example, same example. After using break, I'm going to explain what will happen. And now it will be very clear to you because you have understood the previous example without using break. Now it is same example, same program with break. The value of I is again same example. This I've included only break keyword in this program. This is a similar program, not any single bit changes here. The value of I is 2. The case 1 is not going to be happen. Case 2 occur, and case 2 is going to be printed, and here is a break statement, so that switch case is this case is finished because one case at a time is going to be run, and it will come out with the switch case because there is a break. Okay, if you are going to be enter 4, okay, so immediately it comes to the case number 4 and print case 4, nothing, because there is break. If you are going to be entered, the value of I is 7. So there is no case 7 is defined, the default statement will run. This is the perfect example of the switch case. Okay. These all the previous examples of switch case are conceptual program. These are only made for you to make clear understanding of switch case without using break, default, different scenario of switch case. How can we can use what kind of mistake we can do in switch case sometime. These are all the conceptual program. These are only for the understanding purpose. Now this program is real use of switch case. This is the application of the switch case. So this is the program. This is the real program to clear the concept of the
switch case. Now see, in this program, actually this program uh, mm, is all about getting two numbers from the user, and operation will be decided by the user only. What the user want to do. If we want to add two values or subtract, multiply, and division. In mathematics basics operations between two number can be addition, multiplication, division, and subtraction. For that case, because there is cases are limited, that is only four cases are possible between two number in mathematics, basic mathematics operations, that is addition, multiplication, subtraction, and division. So that user has entered first his choice, what he want to, what he want. He want to add to number, he want to multiply the number, or subtract or divide. There is a operator, and it is a character type because plus minus into these are the special symbol. That is a variable operator and is a character type. So suppose you have entered into next two number. What are the two number? You are going to be perform multiplication between two numbers. So what are the numbers? The number are entered by the user. Now, if the operator entered by the user is multiplication, what will happen? Plus is not operator. Switch case. All the cases are depend on the operator value. If the operator value is multiplication, plus say this case not occur, this case also not occur, it will go directly to the multiplication case. And here number 1, number 2 is going to be multiply. See the example. Uh, First of all, user has entered operator, he want minus. Okay, so in this case, this will go here, no, not here. Okay, and then what will happen? And number is 32.5 and 12.5 is going to be minus only. The answer will be 20.5. And this is the break statement. That means after performing task, switch is going to be closed. The switch case, the cursor will come out from the switch case, and this is the program. This is the end of the program. Clear? So suppose you are going to enter like any symbol like zero, not zero, like O, any character. O is not not defined here. You define only four symbol, mathematical symbol, and O is different symbol, the different character which is not defined. And default statement going to be that is error operator is not correct. Okay. I hope you understand this all. That's it. It's all about switch case, and I have tried my best to include all the cases, default, break, without break, including break, and I've included a lot of example for the clarity of the concept of the switch case. That's all about switch case, nothing more, nothing less. Now it's time to end of this video. I will make next video on loop. It is very my favorite. I like using loop, and I was very passionate to use making different program, different pattern. When I was a student, I was learning programming. Be ready for next video. That is on will be on a loop. Okay. Bye. If you like my content, my video, please like, subscribe, and share as much as possible so that other students get benefited by my video.